हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। सो आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन with Jupyter Notebook. Okay. So yesterday we covered the some basic syntaxes, right? Print statement, if and else, input function, int, how to convert the string to the integer, right? So now I'm going to cover the topic of loop, right? So today I'm going to cover loop, range, function, and data type like string and list. So let's start today's session. So what is the meaning of loop? Okay, what is the meaning of loop? Loop क्या है? Loop. Why do we use loop? So in the C language, I hope you would have learned this thing. What is the loop? So almost every programming language contains this thing, loop. Okay, when we want to repeat certain action, we use loop. So but before going to the loop, let's understand the range function. Okay, let's understand the range function. So range, okay, range. So what is the meaning of range function? Range. So if I give a value here like 10, it returns an expression. एक expression return करता है range. Okay. वैसे definition wise, what is definition of range? Range return the series of numbers. Series of numbers, right? Range return the series of numbers. Let me write the syntax of range. देखिए range का syntax देख लेते हैं. Range start and step. This is the syntax of range. Okay, if I give only one value 10, so this is the mandatory. ये रहेगा mandatory. This is mandatory, essential, compulsory, inevitable, right? So this is mandatory, compulsory, essential. Okay, this one. If I give 10 only, so 10 will go to here. 10 यहाँ पे चला जाएगा. तो range expression हो जाएगा हमारे पास. Range will be 0 to 10 like this. Okay. So if I give 2 to 10, then it became like 2 to 10. If I give third value like 3, now you are saying that you are thinking that what is the benefit of using this one? क्या use कर रहे हैं हम लोग? What is the benefit of using this range? It's just returning an expression. Actually, if we can get the value if we use some wrapper of tuple or list like this. Now I'm getting the value 258. Okay, इस पे use करते हैं. Let's use tuple here. tup tuple. So wrapper can be anything. It can be tuple. It can be a list. Okay, getting sense? देखिए. So it is returning a series of numbers. By default 0 से start हो. By default value is 0 here. जाएगी 10 and take 1 steps. Okay. And here 0 से start हुआ है. So this last number what we are giving, last number is exclusive. Exclusive means not, it will not be, or it would not be included. 10th number is not included in the series. Okay, so you can see here
0 to 9. Okay, so I hope you're getting the sense of range. फिर से देख लेते हैं one more example. In the range, you cannot give float value. In the range, you cannot give the float value. Range 3 to 30. 30. Okay, list over this one. Oh, we need to print it. Okay, so I'm getting value 3 to last number. So 30 is not included. You can see 30 is not included. Okay, up to 29 only. Okay, if you put last number like to take two steps, two steps. Okay, two steps लिए उसने. You can see पहले 3, then 4 skipped, 5, 7, 9, 11 like this. Okay, I hope you're not getting the sense of this one. Yes, any doubt, anyone? Wrapper कुछ नहीं है dear. Wrapper is like list. Just put the list or tuple. I'm just saying it. I'm just telling this is wrapper. Actually, this is a function. Just put the tuple function. Just put the list function over it. Okay. I just can say the wrapper, but this is a function. Tuple function, list function. So if you put the list function, it return the list. If you put the tuple function, it return the tuple. Right. So now next one, list. And if you give -1 here, -1, I'm not getting anything. You can see if I use -1 here, I am not getting anything, because what's the meaning of -1? Please tell me in the chat box. If I use -1 here, what is the meaning of -1? कोई बता सकता है what's the meaning of -1? Yes, tell me in the chat box. What is the meaning of -1? Yes, yes, yes. Tell me what's the meaning of -1 in chat box. Okay. So -1 means by default. What's the meaning of by default? We go left to right. So if I have given 2, go to 10, 2 to 10. But if I say -1, it means that go to right to left. Right से left की तरफ जाना है. अगर if this value is in the minus, it means go to right to left direction. अच्छा ऐसे होएगा, उल्टा हो जाएगा. Right to left direction like this. तब उल्टा जाना है आपने. Okay. So अगर मुझे if I want to go in the reverse direction, so I need to give the value like this. The 10, it's a ascending order. Okay. Getting sense? चलिए. So I hope now you're getting the sense of this range. Okay. So sometimes people ask, sometimes interviewer ask the question, can we use float value in the range? नहीं भाई, float value cannot be used. It always take an integer. -1 चलेगा, but it cannot take the float value. ठीक है, minus value are also acceptable, right? चलिए. So I hope now you're getting the sense. Now you are getting the sense of range. ठीक है. Next. Next है set. Sorry. Next is for loop. Now let's understand the for loop. For loop. So what is the syntax of for loop? First understand the syntax of for loop, then we will proceed. For in sorry for वेरिएबल, एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, वेरिएबल इन आइटरेटर स्लैश then statement 1, statement 2, like this. For variable in int,
in iterator. So iterator can be range, can be string, can be list. Okay. Xrange, dear Xrange is not available in the Python 2. जो range था Python 2 में, जो Xrange था Python, the Xrange of Python 2 now become range here. ठीक है, वही difference है. For each in range 1 to 6, print each. So what is this? Just see the syntax. Okay, मेरी फोटो सामने आ गई. Okay, just 1 second. Where's mouse? Okay. So see this. This is the keyword. ये तो है keyword. This is the variable. This is again keyword. This is the totally iterator. Iterator, which can be iterate. Simple सी बात है. Okay. So for, that's a keyword. Each, that's a variable. You can use for I in range. You can use for j in range. ऐसे कर सकते हो आप. ठीक है. Getting sense? So in this way you can use for loop. So I want to print in the horizontal line. Horizontal में print करना. You want to print in the horizontal fashion. You can use and give something here. Whatever you put here, like comma. After each value, you will get the comma. Okay. If you give space, after each value, you will get the space. If you do not give anything, then it's like a number 1, 2, 3, 4, 5. Okay. चलिए. So I hope now getting the sense. Okay. नहीं जी, comma नहीं हटेगा. Comma you will because after every iteration we are getting the comma. So ये comma तो रहेगा ही रहेगा. Okay. चलिए. Next, consider string. String है let's upgrade. For I or something I in str1, how can we concatenate string? Okay, we will see. Concatenate just add plus. Okay, so string let's upgrade. So in this way, so this is same syntax. This is keyword, variable, keyword, and this is the iterator. Iterate, which can be iterate. ठीक है. Okay, so I hope now getting the sense of this for loop. Next, for loop with list. चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसमें से. कंसीडर आई वांट टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन लेटर. एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. कंसीडर आई वांट टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन लेटर. लेटर इज कंसीडर इनपुट ch input, enter the letter to be checked. J equal to 0, and here I'm going to calculate the frequency of given letter. So if I equal to ch, in that case make the j equal to j plus 1, print j.
oh sorry, outside. So I can print a line here, print like f string, the frequency or occurrence, spelling may be different, occurrence of ch is j. So check, I want to check frequency of e. So e occurred 2 times. Okay, you can see this answer, see this question, oh sorry, see this program. If you have any doubt, please ask. Okay, so I'm just calculating any character, means I'm just calculating the frequency of any character, any given character. So character जो दिया जा रहा है उसके frequency निकालनी है. Okay, so for I in str1, if I equal to ch, make the j plus means increment the j, the occurrence of ch is j. Okay, f is a f string, this is a f string. Okay, please go to the yesterday's lecture. I told you about the what's the meaning of f string. Okay, so I hope now getting the sense. So next is string with a list. What's the doubt? Nothing understand. So what is the difference? What is the problem here? Actually, this is the string. This is the string है ये. String को iterate किया हमने जैसे यहाँ पे किया था. ठीक है, यहाँ range just iterating and checking whether we are getting any value which is equal to each, means ch. What we are giving, that is ch. Okay, ये बार दिखाया था आपको. Print ch. And here we are checking the frequency of ch. Whenever I equal to ch, increase कर दो j को multiple time. अब देखो, consider if I check L. L occurred 1 time. Okay, L occurred 1 time. So I'm checking L. चलो यहाँ पे तो आते हैं. Print I को print करते हैं and check L. देखो, so whenever this I, like L E T S, equal to L, if statement, if this is true, then increase the J by 1. बस इतना सिंपल सी बात है. पहले इसकी its initial value is 0. जैसे ही I ch के बराबर होगा, that time J incremented by 1. Simple, right? So I hope now you're getting the sense. ठीक है? Very easy. It's very easy, not complicated example. So now I'm giving next example. Oh, so for loop with list. Consider a list. In the square bracket, we can fit the list. For each in list 1. मेरे ऊपर से जा रहा है वो. ठीक. So it's not difficult here. एक बार once you create an algorithm, now you can apply. Yeah. List. So in this way we can print the list. ये तो easy है. This one easy. List. How to print the list? This is easy. Not so much difficult, right? Next. अब अगर इस लिस्ट में से if I want to find the frequency of a given number, consider I want to find the frequency of 2. 2 की निकाल लिया frequency. मैं करता हूँ if each equal to 2 तो वहां पे प्रिंट कर देगा क्या? yes. तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हुआ yes.
This is comment. Okay, if you want to make any line comment, just put the hash. अब देखिए यहाँ पे yes कितनी बार है. हाँ, you can see we are getting the yes two time yes आ रहा है. This is a question. This question is same like the previous question. Okay, yes is coming two time. तो उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कितनी टाइम, हाउ मेनी टाइम्स आई एम गेटिंग द यस. सो आई की वैल्यू रखते हैं 0 स्टार्टिंग में, एंड आई इक्वल टू आई प्लस 1 एंड प्रिंट आई. आई की वैल्यू आ गई 2, मीन्स 2 अकरिंग 2 टाइम्स. सो यही दिस लॉजिक आई अप्लाइड इन द प्रीवियस वन. तो सेम ऐसे ही हो गया बस. Okay, yesterday's assignment is very simple. That will take just a 6-line code or 7-line code. You can do that. Okay, just try to understand the question. Okay, चलिए ये भी हो गया. Next. 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 So this one is completed, and next is while loop. Okay, while loop. Okay, मैं rules बता देता हूँ. Yesterday's assignment में थोड़ा explain कर देता हूँ. Yesterday's assignment मैंने दी थी आपको, like एक number था. Okay, it's like yesterday's assignment. Just I'm taking 2 minutes to explain the yesterday's assignment. कहीं को समझ नहीं आया. अपने पास एक नंबर है 60, मैक्सिमम नंबर जाएगा 1 to 60. कोई भी एनी रैंडम नंबर यू कैन गिव टू द प्रोग्राम. ठीक है, कोई भी नंबर देंगे. एंड वी हैव 3 वेरिएबल a, b and c. We have to fill the value in a, b and c. a can take maximum, I think that's a 20. b की वैल्यू थी I think 30 maximum, and here 10. Right? So 20, 30 and 10 maximum value. So if I consider if I select number 52, so we need to fill value of 52. ये ना, this abc is like a bucket. एक bucket ही तरह है abc variable. These are like a bucket. ये bucket 20 लीटर की, and this is 30 liter bucket, and this is 10 liter bucket. I hope you know, can understand. A, B, C. अब इस 52 लीटर वाटर को कंसिडर 52 लीटर वाटर है. मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? दिस इज 10, 20 लीटर, 30 लीटर एंड 10 लीटर. जस्ट अंडरस्टैंड लाइक दिस सो यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, सो वी नीड टू पुट 52 लीटर वाटर इन दिस बकेट. कैसे भी करो, एनी बाय एनी वे, बस तीनों में फिट हो जाना चाहिए. ओके, कंसिडर इफ आई पुट 20 यहां पे, 52 माइनस कितना बचेगा? सो नाउ वी हैव 42 लीटर. सो 30 यहां पे फिल हो गया. नाउ वी हैव 42 माइनस 30, so we have 12 liter. So 12, sorry 12 नहीं, 52. okay, यहाँ पे आएगा 32 माइनस 30, तो 2 लीटर वाटर बचेगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा. ऐसे कर सकते हैं. यू कैन टेक डिफरेंट वन. पहले 10 भर लो, फिर ये दिस वन. यू कैन टेक एनी अप्रोच, बट यू हैव टू फिल बकेट्स. कैसे भी भरो, बट फिल करना है. ठीक है, कंसीडर नेक्स्ट एग्जांपल. Next example, consider if I have 21 liter water. I need to fill in this bucket. 20 liter water है. I need to fill this bucket. Variable की तरह है. So 21 इधर fill किया, 20 liter यहाँ, and 21 minus 20, I will get 1 liter यहाँ पे, and this will be 0. Like this. In this way you have to use. Okay, so this is a very simple program. This is you have to use only the if and else. Okay, answer can be different because you can fill first C bucket, you can fill first B bucket,
If you feel ABC, it's totally you can miss. If you feel ABC, will get this answer. If you feel first C, then B, then A, you may get the different answer. Okay, but आपको क्या करना है? You have to fill the bucket. Okay, I think this is very easy. You can do that. Okay, चलिए. Next, next is while loop. Oh, while loop. So what is the syntax of while loop? What is the syntax of while loop? While in the lower case, then put a condition here, and then colon, statement 1, statement 2. Okay. No, negative answer cannot be accepted. How can be a water liter water in the negative? Okay, negative answer is not acceptable. चलिए, I hope now getting the sense. हाँ, 52 minus 30 रहेगा, ठीक है. So while loop. So how to use while loop? While, then put a condition. Condition रखनी है, like consider uh, let's create a program of accepting the password वाला program जो yesterday we have done the password if and else password program. So let's understand how to use while loop in that program. Let's study. First of all, let's take the password pass1 input. So just 1 second. Enter the password. While pass1. So password, consider I have a password. Password is Intel. Oh, sorry. Let's upgrade. Let's. If password equal to is password not equal to Intel, not equal to, then if password not equal to let's, then interpreter, sorry, then the user fall in the circle of while loop, cycle of while loop. Okay. So if password is wrong, means password not equal to let's, then it print the message, sorry, wrong password. Sorry, wrong password. And again, it will ask the user to enter the password again. Enter the password again. Okay. Once user enter the right password, so here welcome the let's upgrade. चलिए, done. Enter the password. Okay, enter the password. So if somebody entered Dell, sorry, wrong password, enter the password again, this time again. Intel, enter the password again. Okay, again. And if I enter the right password, let's. Okay. So Manish is saying some program I can solve, but it will take significant amount of time. Okay.
I will do this one after the question, and I will show you tomorrow. Okay. So now I hope you get the sense of while loop. While loop आपको पता लग गया? हाँ, if somebody give 5 times wrong, we can block, means we can exit. कि भाई खत्म, exit the program. Okay. We can add if and else condition in that thing. If and else count how many time how many time he or she has entered the password. अगर count भी करना है, so you can take a variable over here I equal to something that is 0. So wrong password, I became I plus 1, and if I equal to 5, या चल 3 तक ले लेते हैं, 3, then statement sorry limit cross, and at that time you can break the loop, and I cannot display this message because user hasn't entered the right password. So करना क्या है? So take a new variable here, flag. So it's little bit complicated. 0, ठीक है, 0, या फिर इसको without using flag, we can add else value over here. I will tell you what's the meaning of else value, but मैं अभी कोड लिख देता हूँ, ठीक है? डियर इसका मीनिंग होता है नॉट इक्वल टू, इसका पूरे का सिंबल का मीनिंग है नॉट इक्वल टू. ओके, देखो, एंटर द पासवर्ड डेल नहीं, इंटेल नहीं, एंड एंटर नहीं. चलो एक बार और, लास्ट टाइम. ओके, अच्छा इट्स अ फोर्थ टाइम. ओके, सो बिकॉज वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट किया था, दैट्स वाई फोर्थ टाइम. सॉरी लिमिट क्रॉस. You can see I'm not getting anything extra. This time I'm using else with while loop. Okay, this is little bit surprise. How can I use else with while loop? Yes, we can use else with while and for loop. I will tell you later. ठीक है? Welcome password. Just a second. Let's. Welcome to Let's Upgrade. I hope not getting the sense. I keyword नहीं. I is a variable here. I is a variable. I is variable. So I can be anything. You can use J. ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा, I hope. ठीक है? Now I'm using else with while loop. Else if के साथ नहीं है. This f is not coming with if statement. This else is coming with while. Okay. So I hope you're not getting the sense of while loop. System को कैसे पता? भाई देख, system I am taking, and every time when user enter the wrong password, I incremented by 1. जब I की वैल्यू 3 क्रॉस कर जाए या इक्वल टू 3 हो जाए, that time we will print the message sorry limit cross and break the loop से बाहर आ जाएंगे, and done. Okay, so I hope now getting the sense. आवाज नहीं आ रही, just let me check. Oh, I am getting my voice. चलिए, while loop be done. Now let's understand some statement by which we can control the loop. पहली statement है break, तो break आपने देख लिया. Second is continue. Okay, continue. So these two statement is, and second is else. Let's understand these three statement. So I'm taking the example of for loop again. So we use break statement when we want to break the loop. We can break the loop by using the break statement. Like for एक list ले लेते हैं. Let's take the list. List contains some elements. For each in list 1.
For each in list 1, consider C equal to 100 divided by each, print C. Okay, I'm getting error. You can see ये पूरा नीचे नहीं आ रहा ना. So now I can see I'm getting the error. Why? एक बार error देख लेते हैं. Error is saying zero division error. Can anybody tell me what's the meaning of zero division error or division by zero? क्या error है ये? Yes. Anyone? Yeah, it's like a not defined error infinity. ठीक है? चलिए, that's great. So C equal to 100 divide. So I want to avoid, means जब भी zero आए, whenever we get the zero, break the for loop. Right? Whenever we get the zero, break the for loop. हमें loop में जाना ही नहीं. So whenever we get the zero, break the for loop. So statement कैसे लाएंगे हम लोग? Oh sorry, इसका तो ठीक था ये, ठीक है. This is okay. If each equal to 0 at any moment, that moment use a break. When the interpreter execute the break statement, it break the for loop. चलिए, breaks the for loop. You can see this time I'm not getting error, but when we get to break the for loop. हो गया? So I hope now getting the sense of break. Okay, any doubt in the break? Yes, anyone? Any doubt in the break? No. So next statement is continue. Continue statement. Continue statement. It means that continue statement when we want to skip a particular iteration. When you want to skip particular iteration, so that means that's a continue statement. अब consider इसमें बहुत सारे zeros हैं. ठीक है, it's a zero. I don't want to break, but I want to skip whenever our program encounters the zero, skip उसको skip कर दो and start with new iteration. तो क्या करेंगे? बिल्कुल स्टार्टिंग में if each equal to 0 at that moment continue. Continue का मीनिंग क्या है? Whenever interpreter encounter this statement, then the interpreter will not go further. नहीं जाएगा नीचे and continue with the next iteration. Sir, please take easy example. Easy है, it's not difficult here. Okay, it's not difficult. ये तो easy example तो है, इसमें क्या different? Okay, if each in list 1, if each 0, continue. मैं skip कर दो, नीचे नहीं जाना. Don't go further. Skip and try with next variable. जो भी next है element है उसके साथ try करो. So now let's run it. People are confusing this one and this one. This is assignment. This is the assignment statement. Assignment. And this one means comparison. ये comparison है. Compare. Okay. चलिए. Next is, so you can use break and continue with while loop. Now the else statement. Else. What's the meaning of else statement? In
in loop. What's the meaning of else statement? Can anybody tell me in the chat box? What is the meaning of else statement in loop? कोई बताएगा? Anybody? इस बार आपसे देखते हैं कि how many of you knows about how many of you know about the else statement? Oh, that's either or means that's when we do with if and else. But I am saying that else with loop. Then what's the meaning of else? If else is coming with loop. Either condition to that. चलिए मैं बता देता हूँ. If loop terminate prematurely then नहीं नहीं ये नहीं है. हाँ ये ठीक है. If loop terminate, yes, terminate by using the break statement. Okay. Now what's the meaning of else statement? Else means, let me tell you. I am starting with new Jupyter book. So what's the meaning of else? When else statement comes with loop, it means that else mean no break statement. ठीक है, नो ब्रेक स्टेटमेंट. चलिए कंसीडर एक बात कर. लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम 1 2 3 4. I want to check whether we have zero or not in the list. Zero है कि नहीं है, बस ये चेक करना है. I want to know whether we have zero or not. ठीक है. So for each in list 1, ठीक है, if we get zero, break at that moment. If each equal to 0, then we can print a message, dear, yes, 0 is present. I want to check, do we have zero note? वैसे तो हम एक लाइन में कर सकते हैं, zero in list ऐसे कर सकते हैं. I can write, but just I'm giving the example of else. ठीक है, एक example ले रहे हैं. So if each equal to 0, I can say 0 is present. If 0 is not there, what to do? Consider 0 नहीं है, फिर क्या करेंगे? If I write like here, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, print 0 is not. अब देखिए प्रॉब्लम क्या है. फॉर ईच आइट्रेशन इफ एंड एल्स का प्रॉब्लम आ जाएगा. कंसीडर 1 इक्वल टू 0 नहीं है, देन 0 इज नॉट प्रेजेंट. 2 नॉट इक्वल टू 2 इक्वल टू 0 नहीं, 0 नॉट प्रेजेंट. 4 इक्वल टू 0 नो, 0 is not present. 0 equal to 0, yes, 0 is present. So that's a problem here. Okay, yes, we can do one thing here कि अगर 0 मिल ही गया तो यहाँ ब्रेक कर दो. Now we are getting here 0 is not present 3 times because 3 times 0 is not appearing. Last time 0 is appearing, that's why 0 is present. But we are getting two message here. Message पहला क्या है? 0 is not present. And we are getting also 0 is present. तो सच क्या है? What is the real here? We know 0 is present. So इस case में as must become outside with for loop. अब मैंने as को बाहर कर दिया. Now let's understand. Now I can see 0 is present. 0 है. If 0 is not there, can say 0 नहीं है, then 0 is not present. Means if there is no execution of, please listen carefully, listen careful. If there is no execution of break statement, then the interpreter execute the else statement, which is coming under the for, which is coming with for loop. Yes, getting sense.
Yes, if there is no break execution of break statement, if there is no execution, मैं कह रहा हूं अगर कोई एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ ब्रेक स्टेटमेंट, बिकॉज जीरो इज नॉट हेयर, तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. इट इन दैट केस इंटरप्रेटर विल एग्जीक्यूट द एल्स स्टेटमेंट, तब एल्स चलेगा. तो प्लीज टेल मी, गेटिंग सेंस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एल्स? Yes, anyone, any doubt in the else statement? We have completed the our loop structure. Now it's time to go with string and list. Yes, किसी को doubt है? Yes, any doubt, anyone? नहीं, 4 plus else means if there is no break statement. If there is no execution of break statement, then interpreter execute the else statement. Please listen carefully. If there is no execution of break statement, okay? चलिए, यहाँ पे मैं जीरो लगाता हूँ, जीरो. Now I can see zero is present. अब break statement execute हो गया. It means that interpreter will not execute the else statement. Okay, please understand, else means no break statement. Getting sense? No break statement. So मैं लिख भी देता हूँ so that you can understand. This else means no break statement. ठीक है? What if each equal to 6? Because वो तो हमने ब्रेक कर दिया ना डियर, हमने ब्रेक ही कर दिया. Just we want to check whether we have zero or not. चाहे जीरो दो बार आए या एक बार. We are checking do we have zero or not. Yeah, zero is present. Done. Okay, you can do simple thing, zero in list one, लो true and false में सर आ जाए, वैसे भी कर सकते हो, but just give you the example of else. I am taking this example. Okay, I hope now getting the sense. चलिए, next. So I hope you're getting the sense of a loop. Yes, I hope there is no doubt. किसी को डाउट है लूप में? देखिए, इससे इससे बढ़िया नहीं कोई बता, इससे बढ़िया मुश्किल से मिलेगा आपको कहीं पे. So understand the loop structure. You got now you got the now you are got the example of for loop, while loop, uh, break statement, continue statement and else statement. ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज स्ट्रिंग. सो वी हैव सम डेटा, वी हैव डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट इज int float तो हो गया, स्ट्रिंग. ठीक है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट. तो I will try to cover these two with some amount. Otherwise, this is very big topic, string, list, very big topic. I'll try to cover in just in 40 minutes. Okay. So what is string? What is the definition of string? एक क्वेश्चन ले लेता हूँ लास्ट. कृष्ण इज आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग. कैन फॉर लूप बी यूज फॉर ऑल डाटा टाइप? नहीं डियर, फॉर लूप नहीं हो सकता. कैसे पता लगेगा किस पे फॉर लूप यूज कर सकते हैं, किस पे नहीं? सो हाउ टू चेक ऑन विच डाटा टाइप आई कैन यूज दी फॉर लूप? सो मैं सिंपल सा था, कोई भी ऑब्जेक्टिव, वट एवर द ऑब्जेक्टिव कैन टेक, लाइक इंटीजर, कोई भी इंटीजर ऑन द dir. ओके, प्रिंट करते हैं इसको, सॉरी. And if I print on the string str1 on dir,
एंड एक और कर लेते हैं. जस्ट यू हैव टू पुट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट. अब मैं यहाँ लिखता हूँ ये वाला. देखिए किस पे फॉर लूप यूज कर सकते हैं, ऑन विच डेटा टाइप यू कैन यूज द फॉर लूप. कैसे पता करेंगे? इफ यू गेट द आइटर, पाइथन 3 में बता रहा हूं. इफ यू गेट दिस आइटर, डू वी हैव आइटर हेयर? कहीं नहीं है यहाँ पे. ठीक है. इफ यू गेट दिस आइटर स्पेशल मेथड टू अंडरस्कोर इन द स्टार्टिंग आइटर, ऑन दैट डेटा स्ट्रक्चर यू कैन यूज फॉर लूप. स्ट्रिंग पे कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई फॉर लूप ऑन स्ट्रिंग. यू कैन अप्लाई फॉर लूप ऑन लिस्ट. ये एम्प्टी लिस्ट है. दिस इज द इंटीजर. वी डोंट हैव एनी आइटर हेयर. यहाँ पे आइटर नहीं है. So that's why on the integer you cannot use for loop. Okay dear, I hope now I get this answer. ठीक है, चलिए. So now it's string सही कह रहे हैं. String means set of characters, or I can say whatever inside the quotes, whatever inside the quotes, zero or more characters. Zero or more character inside the quote, that is string. Simple सी भाषा. str1 ऐसे कर लो. Nothing. So what is this? Print type of str1 class string. If I apply abc 1 2 3, this is also string. Okay, zero or more character. अब आपने लिख दिया combination of characters. So यहाँ पे तो कोई character ही नहीं है, just a null here, nothing here. That's also string. Zero भी हो सकता, nothing. This is nothing, just a quotes. So this is also a string. ये भी string मानी जाएगी. ठीक है, for Python. Okay. So remember one thing here, string is immutable. String is immutable. Yes, there is assignment today. I will tell you what is that. String is immutable. String means once you define the string cannot be changed. str1 hello. Okay, if I want to find the length of a string, print 5. Okay, so in this way you can find the length of a string. So string हो गया. So there are some what are the built-in methods of a string? देखिए there is some difference between method and function. ये तो रहा function, length is a function. जब string inside pass कर रहे हैं इसके अंदर, तो this is a function, length is a function. Python में ना बड़ा clear cut है. आप ऐसा नहीं बोल this is a math. आप ऐसा नहीं बोल सकते. You cannot say like method is a length is function. Length function रहेगा. ठीक है. What is a method? Method ऐसे पता लगता है. एक just you can use print dir direct this function and put any object of string. कोई भी object लीजिए like uh, like I can take a name. मनीष ले लेते हैं. देखिए these all are the methods defined in the string class. जो string की class है उस class में ये सारे method define हैं. So these are the method. So कैसे use कर सकते हैं इन methods को? Now I am going to tell you. चलिए str1 किया and किसी method like
स्ट्रिप है अपर केस str1 लिखते हैं पहले str1 इक्वल टू हेलो एंड str1 डॉट अपर। ठीक है, हो गया। नाउ प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ str1। अब मुझे एक बात बताएंगे आप, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स टेल मी, आई एम गिविंग टू ऑप्शन, ए आंसर, इसका आंसर होगा हेलो, और बी या टेल मी ए एंड बी, ए और बी। यस यस यस, somebody can tell me the reason why lower case, because we have converted into the upper case. So now I'm getting B, but one person is saying B again and again. Yes, yes. Tell me, tell me. Okay, answer is A, dear. I told you one thing. ये तो hello है, ठीक है. Upper किया. It means that what is this hello? We can say this method is returning the uppercase version. Listen carefully. Returning the uppercase version of string 1, but the original will remain same क्योंकि list is immutable, list change नहीं किया हुआ है। ठीक है, sorry, because string is immutable, sorry, because string is immutable, string change नहीं हुआ है। right, मैं गलती से list बोल गया। this method is returning, upper method is returning the upper case version, new version, एक new string दे रहा है आपको। ठीक है, so let's see some important methods. So you can apply lower, upper, swap case very easy. ठीक है, consider if you get a string hello and junk character inside it, कुछ junk character आपको मिल गया। okay, junk character, so you want to remove the junk character, कैसे, str1 dot strip, trim होता है in different language but here we have strip, write your all the junk characters, so hash को करना है and dollar करना है and at the rate भी आ गया, इनको remove करना है। now I'm getting the string without the junk character, it strip the junk character from the ends, right hand side and left side, not in the between of the string। okay, yes, getting sense। ठीक है, strip आपको, I hope now getting the sense of string, strip। next, so now I'm going to tell you some important methods now। next is split method, split, consider I have a IP address, you know what is the meaning of this one, this IP address? ठीक है, एक IP एड्रेस लिया या कुछ भी ले लीजिए आप, कोई एनी स्ट्रिंग, आई वांट टू ब्रेक दिस स्ट्रिंग, मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, मींस आई वांट टू स्प्लिट दिस स्ट्रिंग बेस्ड अपॉन सम डिलिमिटर। अब इसको लिख लेते हैं एक बार, 192.168.10.1, आई वांट टू स्प्लिट इट, इसको स्प्लिट करना है ऐसा, ऐसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ip.split method and provide the delimiter, that's a dot, you know, uh,
192. So now I'm getting a list here. ये एक list मिल गया but with splitted string. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. Consider I have a string str1 which is saying hello everyone learn Python. A string है, str1 is a string. uh, I want to break into different words. जो words हैं hello different होना चाहिए, everyone learn and Python. इसको split करना है. तो str1 dot split. By default, if you don't give space here, like अब तो दे दिया space, I have given a delimiter space. So based upon space, जहाँ पे space आ रहा है split कर दो. तो hello everyone learn Python ऐसे आ गया. ठीक है. Next, if you do not give a space here, if by default it takes the space. हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा है मनोज ने. हाउ वी नो मेथड एंड फंक्शन. देखिए मेथड कैसे आ रहे हैं, डॉट के साथ आ रहे हैं आपके साथ. स्ट्रिंग को पास नहीं कर रहे. लेंथ में क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग को पास कर रहे थे, str1 ऐसे कर रहे थे. दिस इज अ फंक्शन. तो ये हो गया फंक्शन. बट इन द स्ट्रिंग वी आर यूजिंग डॉट एंड देन लोअर केस जो भी आपके पास है. तो ये है आपका मेथड, ये है मेथड. ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. सो इन दिस केस आई हैव अ स्ट्रिंग एज ऑब्जेक्ट. ठीक है. ओके, आई होप यू गेटिंग द सेंस. Yeah, length is function. Upper case, lower case, strip, split. These are the methods. Okay. So I hope you're getting the sense of split method. ठीक है. Next, join method. Join. अब ये string है जैसे मान लीजिए. ठीक है. ये string है. This is string. अच्छा हाँ, एक और. Let's take another string. Hello everyone. I want to split it, but the delimiter is split. Delimiter मैंने दिया. This one. Now this time I'm not giving space as delimiter. This time I'm giving the hyphen as delimiter. तो इसमें कोई एरर नहीं है. It return the single string. इसको delimiter कहीं मिला नहीं. So that why it is giving a single string in the list. List के अंदर string आ रही है. देख लीजिए. अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क. Yes. Any doubt anyone? ये है, ये लिस्ट है ड्रियर. दिस इज लिस्ट. ये एक लिस्ट है. ओके. चलिए. बट लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स हैं. ये स्ट्रिंग्स हैं. दीज आर द स्ट्रिंग्स. टोटल लिस्ट, but list contain the strings. एवरी वर्ड सेपरेट ना. तो ये एवरी वर्ड सेपरेट हो गया बिकॉज वर्ड की क्या है, मीन्स दैट्स अ स्पेस. स्पेस से सेपरेट हो जाता है. ठीक है. नाउ यू वांट टू जॉइन. कंसीडर आपके पास ऐसा स्ट्रिंग है. ये है स्ट्रिंग. दिस इज सॉरी, आपके पास लिस्ट है, एक लिस्ट या फिर टपल. कंसीडर ये आपके पास लिस्ट है बट लिस्ट कंटेन ऑल दी स्ट्रिंग्स. लिस्ट कंटेन ऑल द स्ट्रिंग. यू वांट टू जॉइन इट अगेन. आपको इसको ज्वाइन करना है. तो कैसे करेंगे ज्वाइन. देखिए ज्वाइन मेथड लगाएंगे. ज्वाइन पास दिस लिस्ट. आई वांट अ डिलिमिटर. क्या डिलिमिटर बनेगा. सॉरी सॉरी, क्या डिलिमिटर बनेगा. मैंने दे दिया ये हाइफन. हाइफन एक्टिंग एज अ डिलिमिटर डॉट जॉइन. तो इसके अंदर हाइफन आ गया एवरीवेयर. हाइफन बाय यूजिंग हाइफन. यस, दिस इज अ डिलिमिटर. यस कृष्णा, दिस इज अ डिलिमिटर. join method is opposite of
Okay, so this is join method is opposite of opposite of not a list, sorry, it's opposite of I was thinking it's a split मेथड का जस्ट अपोजिट है इट टेक दी टप्पल दे सकते हैं या फिर आप लिस्ट दे सकते हो अपोजिट ऑफ स्प्लिट ठीक है हो गया आपका अगर आप यहाँ पे डॉट दे दो कंसिडर डॉट दिया सो नाउ आई एम गेटिंग दी आईपी एड्रेस सो डॉट इफ यू डू नॉट गिव एनीथिंग कुछ नहीं दिया एज इट इज आ गया Ayush is saying like we haven't specified variable name in the out 19 19 तो है ही नहीं कहीं पे अच्छा इसको वेरिएबल में डालना है तो यू कैन टेक अ वेरिएबल ओवर हेयर एंड हेयर आई कैन इफ आई यूज हैश ओवर हेयर हैश लगाना है एंड प्रिंट ए ओके so I hope now getting the sense of split and चलिए so there are lot of method please practice इसको practice कीजिए you will learn कैसे करेंगे practice all methods check all the methods so there are lot of methods you can see there are lot of methods ठीक है सबको ट्राई कीजिए वन बाय वन एंड इफ यू वांट टू गेट द हेल्प चाहिए अगर आपको सो लिटिल बिट हेल्प यू कैन गेट बाय यूजिंग द हेल्प स्टेटमेंट हेल्प फंक्शन का यूज कीजिए हेल्प एंड ऑन द हेल्प जस्ट पुट योर क्वेरी str डॉट लाइक आई वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल टाइटल का मीनिंग क्या है भाई देखिए जस्ट str डॉट टाइटल बस ऐसे लिख दीजिए प्रिंट में थोड़ा गलती है अच्छा सो यू विल गेट लिटिल बिट हेल्प क्या दिस टाइटल मेथड रिटर्न्स अ वर्जन अब ये वर्जन बोल रहा है वर्जन ऑफ अ स्ट्रिंग वेयर ईच वर्ड इज टाइटल केस ये कैमल केस की तरह बोलते हैं इसको ठीक है मोर स्पेसिफिकली वर्ड स्टार्ट विद अपर केस लेटर एंड ऑल रिमेनिंग केस कैरेक्टर हैव द लोअर केस वर्ड कह रहा है कि वर्ड जो भी नया वर्ड होगा दैट स्टार्ट विद द अपर केस चलिए आई होप ना गेटिंग द सेंस ऑफ स्ट्रिंग ठीक है नाइस है लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट तो ऐसे आपको हेल्प मिल जाएगी मींस यू डोंट नीड टू गो टू दी अगर आप मान लीजिए इफ यू नो कि लिटिल बिट आप भूल गए अगर फॉरगेट लिटिल बिट कि अच्छा सिंटेक्स क्या था सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ हेल्प फंक्शन हेल्प इज फंक्शन ठीक है dir से आप पता करोगे हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल फॉर दिस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है बीच में हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट सिंटेक्स ऑफ दैट मेथड एनी मेथड यू कैन यूज हेल्प तो ये आप हमेशा याद रखना ओके ठीक है आईडी जस्ट दिस इज जुपिटर नोटबुक ओके जुपिटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं यू कैन यूज दिस ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लिस्ट सो अब बात करते हैं लिस्ट के बारे में अब आप सारे के सारे एक एक बार ट्राई करना ठीक है यू विल गेट द सेंस कि कैसे यूज कर सकते हैं इंडेक्स कैसे यूज करना है इज डेसिमल इज डिजिट ठीक है चलिए सो स्ट्रिंग इज ओवर सो रेस्ट ऑफ यू एक एक बार ट्राई कीजिए यू विल गेट द सेंस ठीक है जस्ट एडिटर एक थोड़ा इंटरेक्टिव एडिटर है नेक्स्ट इज लिस्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट लिस्ट का मीनिंग क्या है लिस्ट लिस्ट इज अ कंटेनर ये कंटेनर है एक बर्तन की तरह है एक ठीक है एक कंटेनर की तरह है विच कैन कंटेन द heterogeneous data type okay it start with square bracket में होता है ये and we can put the different data type like 10 is integer 10.9 that's a float and a character or string you can say
और एनीथिंग लाइक टपल, टपल भी हो सकता है, टपल इज अ छोटा भाई ऑफ स्मॉल लिटिल ब्रदर ऑफ लिस्ट। ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ टपल। टपल इज अ लिस्ट टाइप बट इम्यूटेबल। टपल के अंदर आप कुछ हैवी न्यू ऐड नहीं कर सकते। वंस यू डिफाइन टपल यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग, बट इन द लिस्ट यू कैन डू लोड ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, दैट्स व्हाई लिस्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाइथन। So 10, 10.9, these all are the data type list can contain. Okay, list contain करता है। तो देखिए लिस्ट कैसे, एम्प्टी लिस्ट ऐसे प्रिंट लिस्ट, प्रिंट एंड टाइप ऑफ लिस्ट। ठीक है जी। देन लिस्ट with some numbers, hello and 90. List contain the different type of element and you can add, remove, delete the element from the list. अब कंसीडर मुझे इस 90 को हेलो को चेंज करना है, क्या करेंगे? वर्ड्स इंडेक्स, सो इन द लिस्ट एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में भी अप्लाई करते हैं, लिस्ट में भी, टपल में भी। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग इज अ मेन पार्ट। मैं बता देता हूँ इंडेक्सिंग कैसे निकालते हैं। स्ट्रिंग में भी चलता है सब और लिस्ट में भी चलेगा, सेम टू सेम फंडा हमारा दोनों में चलता है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग क्या होता है? देखिए इंडेक्सिंग, देखिए सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। फोर और ये हो गया हेलो और 90। सो वी हैव इंडेक्स, ये 0 नंबर पे, ये 1 पे, ये 2 पे, 3, 4। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और ये इधर से नेगेटिव से भी चलेगा। क्या? -6, -5, -4, -3, -2, -1, -0। -0 कुछ नहीं होता भाई, -0 इज नॉट एग्जिस्टिंग। ओके, सो -6, -5, -4, -3, -2, -1। ओके, तो ये इंडेक्सिंग है। कंसीडर आई वांट टू फाइंड व्हाट इज एट द इंडेक्स नंबर 4, ऐसे आ जाएगा मेरे पास हेलो। अब मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है बिकॉज हेलो इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई कैन चेंज इट। जस्ट राइट द न्यू वैल्यू ओवर हियर लाइक 80, प्रिंट लिस्ट। अब ये चेंज हो सकता है बिकॉज दिस इज नॉट इम्यूटेबल। देखिए हो गया चेंज। यस, ओहो यहाँ तो आग लग रही है पूरी। ओके, सो आई होप नॉट गेटिंग द सेंस। देखिए, आई होप नॉट गेटिंग द सेंस। ठीक है, तो लिस्ट में आप ऐड, रिमूव, डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। कंसीडर आई वांट टू डिलीट इट, 80 को डिलीट करना है, क्या करेंगे? 4 लिखा, डिलीट डेल, डन, प्रिंट लिस्ट 1, डिलीट हो गया, डन। नेक्स्ट, नाउ लेट्स चेक व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल। कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं लिस्ट के लिए? सो वही सेम फंडा, dir ऑन एनी लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो भाई देखो ज्यादा नहीं है, इट्स अपेंड। ओके, दीज ऑल आर द मैजिक मेथड्स। ये मैजिक मेथड्स होते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम डबल अंडरस्कोर एंड सी डबल अंडरस्कोर, दीज ऑल आर द मैजिक मेथड। ठीक है, मैजिक मेथड है ये। लेकिन ये है हमारे पास अपेंड के लिए, इट्स अ कॉपी, सॉरी, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप। ओके, या -1 पोजीशन इक्वल टू लास्ट पोजीशन, यू आर राइट कृष्णा। -1, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, हाँ सही कहा था आपने, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया मेरे से, सॉरी, इट्स अ -1 हियर। -1, -2, -3, -4, -5, -6। Yes, you're right. Sorry, by mistake I wrote the different one. Okay, this is the right syntax. This is right indexing. Okay, if you write here list one dot -1, that's the last one, 90. Okay, so thank you for correcting me. Oh, by mistake I start from -6.
Okay, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Okay, thank you. Okay, you can use slicing. Slicing भी कर सकते हैं इसके अंदर. स्लाइसिंग कैसे करेंगे? देखिए, लिस्ट वन कंसिडर आई वांट टू नो 2 to 5. ऐसे स्लाइसिंग कर सकते हो आप. एंड सेम केस यू कैन अप्लाई ऑन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में भी कर सकते थे. इफ यू अप्लाई स्ट्रिंग हेलो everyone एंड str1 2 to 5, तो दोनों में आप स्लाइसिंग स्प्लिटिंग कर सकते, स्लाइसिंग कर सकते हैं. स्लाइसिंग. ओके, दोनों में स्लाइसिंग कर सकते हो. ठीक है. अगर आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो आप -1 लगा देना यहाँ पे, और यहाँ पे भी -1 लगा के आप रिवर्स डायरेक्शन में जा सकते हो. यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा. यहाँ पे जरूर आ गया रिवर्स डायरेक्शन में. 2 to 5. Oh sorry, it should be this one. ऐसे नथिंग. ओके, रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए यू हैव टू गिव द लाइक 5 to 2, और यहाँ भी सेम टू सेम 5 to 2. तो लिस्ट के केस में भी अप्लाई हो रहा है और इसके में भी अप्लाई हो रहा है. स्पेस OL. ओके, दिस इज स्लाइसिंग. सो नाउ लेट्स सी द मेथड्स ऑफ अ लिस्ट. लिस्ट में बहुत सारे मेथड्स हैं. अपेंड, मोस्ट यूजेबल मेथड अपेंड. ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी. मोस्ट यूजेबल मेथड अपेंड. अपेंड में क्या है? कंसीडर लिस्ट 1 2 3 4. आई वांट टू ऐड वन मोर. एक और ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? लिस्ट डॉट अपेंड 10 एंड प्रिंट द. सो अपेंड मेथड एडेड द सिंगल एलिमेंट एट द एंड. सिंगल एलिमेंट ऐड करता है. ओके, अपेंड मेथड एडेड द सिंगल एलिमेंट एट द एंड. काउंट भी कर सकते हैं. मींस इफ यू वांट टू काउंट लेंथ भी काउंट कर सकते हो. लेंथ ऑफ लिस्ट वन, दैट्स अ फंक्शन. फिर से आ गया. एंड यू वांट टू फाइंड द काउंट, मिस काउंट how many value, how many fours are there? Only one. Consider list contain this one. How many threes are there? List one dot count 3. Oh, 3 appear 3 time. 2 2 2 appear 2 time. What's a magic? 1 appears 3 time. Okay, so let's see one example. Consider for list is empty 1 से लेके 10 तक. So 1 to 10, how many even number are present? वैसे तो हमें पता ही है. So put all the number from 1 to 10 in the list. 1 to 10 में लिस्ट में डालना है. जस्ट मैं एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए. एक एम्प्टी लिस्ट बनाइए. फॉर ईच इन रेंज 1 to 11. लास्ट नंबर नॉट इंक्लूसिव 1 to 10 हो जाएगा. सो इफ ईच मॉडुलस 2 equal to 0, in that case append the list one dot append that number and at the end. देखिए, सिंपल था. मीन्स 1 से लेके 10 तक हाउ मेनी इवन नंबर्स आर प्रेजेंट, उसको लिस्ट में अपेंड कर दीजिए. देखिए, एम्प्टी लिस्ट लिया एंड अपेंडेड. डन हो गया. ठीक है. रिमूव कैसे करना है? हाउ टू रिमूव? कंसिडर आई हैव अ लिस्ट वन. इसका लिस्ट वन है, ये लिस्ट वन है. लिस्ट वन डॉट रिमूव. अब मुझे रिमूव करना है. रिमूव कैसे करना? रिमूव करना है कंसीडर 2 को. देखिए, आई वांट टू रिमूव 2. मुझे पता है किस एलिमेंट को रिमूव करना है. एंड प्रिंट लिस्ट वन. ध्यान से देखना.
दिस 2 हैज बीन रिमूव्ड, ये 2 रिमूव्ड हो चुका है, बट देयर आर स्टिल देयर नंबर ऑफ 2s, ये एक और 2 है और एक, हाँ एक और प्रेजेंट है. It only removes the first occurrence. Remove only removes the first occurrence, not all the occurrence. सारी occurrence को remove नहीं करेगा. ठीक है जी, सारी occurrence को remove नहीं करेगा. So I hope you get in the sense. ठीक है. So means आपने देखा del index number. Consider I want to, अब del में हमने क्या किया था, del like list 1. In the del I provided the index number कि मुझे मान लीजिए 34 remove करना है. I want to remove, consider एक list लेते हैं, इसमें लिखते हैं A, B, C and D and फिर से A. See this case, consider I want to remove A, first A, तो मैं remove use कर सकता हूँ. I can use remove and print remove हो गया. ठीक है, I hope you getting the sense. अब list को दोबारा ले लीजिए. I want to remove last वाला A, अब last वाला A करना है. Means I don't want to remove the first occurrence, I want to remove the second occurrence. तो second के लिए I can use index. भाई index use कर सकता हूँ. कैसे? इसका index, what is the index of last A? -1 हो सकता है, and it can be a 0, 1, 2, 3, 4. 4 index or last one, whatever. So I can use del list 1 index value -1 and then print list 1. Done. So remove take the value and del take the index. So please remember this one. Okay. ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन. ये तो सॉरी, ये दिस इज दी. Okay, if you want to check whether particular element present on the list or not, ये list 1 है हमारे पास. I can check if sorry, A in list 1 true. ऐसे चेक कर सकते हैं आप. If you want to check particular element present or not, can use list 1. Okay. So what are the methods available in the list? dir. So there are a lot of methods. So pop हमने कर लिया, append कर लिया, index if you want to find the index of particular, count हमने कर लिया. ठीक है. You want to find the index of particular item like print list 1. ठीक है. अब इसमें इंडेक्स निकालना है डी का, भाई डी का इंडेक्स बताइए. सो वी कैन यूज इंडेक्स. अच्छा एक नई लिस्ट लेते हैं, इसमें ये सही लिस्ट नहीं है. लेट्स टेक ए, ए, बी and C and B and find the index of A. This index method by default return the index of first occurrence. देखिए A तो 2 बार आ रहा है, but it only always return the first occurrence. ये सारे इंडेक्स आपके रिटर्न नहीं करेगा. कंसिडर फॉरगेट कि कैसे, व्हाट्स द सिंटैक्स ऑफ इंडेक्स. तो क्या कर सकते हैं, no need to worry, just use the help over this one, help on the list dot index. देखिए आपको सब पता लग रहा है यहाँ पे. इसका इंडेक्स सिंटेक्स है वैल्यू स्टार्ट. ये मैं नहीं करा रहा अभी, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज. स्टार्ट क्या है, ये स्टॉप क्या है, यू विल गेट सो मच कंफ्यूज. जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर कि रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू. ओके, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द वैल्यू. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर असाइनमेंट. असाइनमेंट बताया था वैसे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था. सो आपको क्या करना है, असाइनमेंट क्वेश्चन, दिस असाइनमेंट क्वेश्चन.
ये एक लिस्ट आपके पास, दिस इज योर लिस्ट, रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम द अबव लिस्ट एंड मेंटेन द ऑर्डर। आपको डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव करने हैं, आप चाहे न्यू लिस्ट, यू कैन क्रिएट अ न्यू लिस्ट, मींस यू हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम द अबव लिस्ट। यू कैन क्रिएट अ न्यू लिस्ट, आप न्यू लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं विच कंटेन द न्यू नंबर, मींस विच डजंट कंटेन द डुप्लीकेट नंबर एंड ऑर्डर इज मेंटेन। ऐसा नहीं है कि आपने रिमूव कर दिया और ऑर्डर कुछ भी हो गया। ओके ठीक है, समझ गए? मींस इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर मस्ट बी लाइक 1 तो आएगा आएगा ही आएगा, 2 3 4, 1 remove 3 remove 1 remove 3 remove 100, 4 is already there, 1 remove 4, so this would be the answer। ठीक है, ऐसा आंसर नहीं आएगा कि इफ यू रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट, एंड ऐसा आंसर नहीं आएगा यू कैन से कि सर देखो रिमूव हो गया डुप्लीकेट बट ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ। ये ऑर्डर्ड में है, द ऑर्डर इन विच यू हैव गिवन द ऑर्डर इट्स मेंटेन द सेम ऑर्डर। हाँ डुप्लीकेट रिमूव हो गया, डुप्लीकेट वी हैव रिमूव्ड बट ऑर्डर इज मेंटेन। यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव है बट ऑर्डर इज नॉट मेंटेन। So you have to remove the duplicate element. You can take the help of new list. Which is your favorite movie? Okay, my favorite movie. It's my last movie. I like the Marvels movie of Tony Tony Stark, Tony Stark and Thor. Okay, okay. So I hope you get the sense. Okay. Any doubt, anyone? So this is your assignment. Okay, right? So ये question, I hope now you're getting a sense of this question. ठीक है, these all are the elements, remove the duplicate element and maintain the order। आपको कोई सेट्स वगैरह यूज नहीं करना, कंसीडर यू नो द सेट एंड आप सोचो कि लेट्स यूज द सेट एंड रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट, नहीं, यू हैव टू मेंटेन द ऑर्डर, ऑर्डर आपको मेंटेन करके रखना है। so that's the assignment। okay, so I covered all the topic related to assignment, like how to remove, so I told you about how to in order to remove yeah, we can use one more method to remove the element, that's a pop by using index। so consider, just I will take one more minute, okay, one more minute, list one like A, B, C, A, B, K, ये है, ठीक है, this is a list। I can remove any element by using the pop। In the pop you can provide the index, otherwise it will take the last index। if you do not provide, it will take last index, provide the index। consider मुझे इस A को निकालना है एंड इसका इंडेक्स है हमारे पास 0, सॉरी यहाँ भी 0 हो गया, इसका इंडेक्स है 0 0। बेनिफिट ऑफ पॉप इज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पॉप, इसके बाद मैं लिस्ट प्रिंट करा लेता हूँ। बेनिफिट ऑफ पॉप इज इट रिटर्न्स दी, अब मैं अगर इसको ना लिखूं 2 मिनट के लिए मान लीजिए, इट रिटर्न्स दी पॉप्ड एलिमेंट। अगर मुझे इसको स्टोर करना है कहीं पे, वट एवर आई एम रिमूविंग, प्रिंट रिमूव्ड एलिमेंट इज ए। देखिए रिमूव्ड एलिमेंट क्या हुआ, इसको दोबारा रन करते हैं और यहाँ बी से लेते हैं, ठीक है। सो रिमूव्ड एलिमेंट हमारे पास हुआ क्या, बी, वट एवर द फर्स्ट एलिमेंट वी आर स्पेसिफाइंग द इंडेक्स, इंडेक्स से रिमूव हुआ एंड रिमूव्ड एलिमेंट मिल गया। इन द केस ऑफ डेल, व्हेन यूज डेल, डेल लिस्ट 0 जो रिमूव करना है, यू विल नो यू वी वर नॉट गेटिंग द रिमूव्ड एलिमेंट नहीं मिल रहा था, बट इन दिस केस वी आर गेटिंग द रिमूव्ड एलिमेंट।
अब इस रिमूव्ड एलिमेंट को आप किसी न्यू लिस्ट में सेव करा सकते हो, मींस दिस रिमूव्ड एलिमेंट यू कैन सेव दिस रिमूव्ड एलिमेंट इन द न्यू लिस्ट। ठीक है ना, लिस्ट 2 बना लो, उसके अंदर आप अपेंड करते चले जाओ। So in this way you can create in this way you can uh, uh, you can do your assignment, you can write your assignment, you can create your solve your assignment question. Okay, so I hope you get in a sense. There are a lot of things in the list, and list cannot be covered in just 20 45 minutes. It will take 3 hours. So but I try my level best to explain string and list. Okay, so this time to say bye bye, bye bye everyone, bye bye, and happy weekend. Bye bye, we will meet tomorrow, we will meet tomorrow. Okay, bye bye everyone, bye bye.